Ma'am, please start. Yeah, could I start now, sir? Yes, please. Yeah. Good morning, everybody. I'm Priyadarshini from Cimage Professional College, Patna. And thank you very much for connecting with us. All students of all three colleges are connected with us today, and they will be seeing this workshop online on YouTube. So I think we should start now. These students, last time also we had around 300 students who had enrolled for the NPTEL courses. And there were a lot of students who took the exam and got the certificate also. So we are positive about, thank you very much for connecting with us. All students of all three colleges are connected with us today, and they will be seeing this workshop online on YouTube. So I think we should now start. And all our students are in the classes. They are seeing it live in the classes itself. We have connected it with the digital board, and they will be seeing it there. Okay, ma'am. Yeah. Good morning, everyone. Myself, Shiv Shankar Das. I am from NPTEL Office, IIT Madras. Welcome to this NPTEL e-awareness workshop being organized by IIT Madras in association with Cimage, a professional college, Patna, Bihar. Let me share my screen and then I'll take it forward. I hope you all can see my screen. So during this talk, I will be primarily talking about all these things. What is NPTEL, Swayam, how to enroll into the course, how to complete it, what are the activities that are available that are to be done during a particular week, how do the credit transfer takes place, then particularly for the student's perspective, what is domain certification, how to get an internship opportunity through NPTEL, how to improve on your soft skill perspective through NPTEL. If someone is interested for competitive exam like GATE or jobs in public sector undertakings, they need to clear their GATE examination. In that case, how NPTEL portal can help you in GATE preparation. Then particularly for the faculty members, what is faculty development program and how NPTEL is connected with that. We'll also talk about different other initiatives like lab workshops, corporate social, that is fee waiver schemes and all. Then we'll also see NPTEL Plus, what is that, self-paced courses. We'll talk little about local chapter, the benefits associated with it, and we'll also take the question and answer. So instead of waiting till the end for the question and answer, since the students are seated in the class, maybe it will be good that if you have got any doubt, please post your queries as I talk through the chat box. Okay, through YouTube chat box, please post your queries so that I feel, okay, I am not talking just in a blank space. I have got some responses coming from the YouTube chat boxes. Okay, so let's move forward. So NPTEL, what it is? It is. So could I say something here? Yes, please. So can we do that? We get the questions from the student and I post it to you all together. That is also okay. Okay. If it is that okay, in between also you can stop me because say certain things I am talking, and at that point the students need a clarification on that aspect. We can definitely answer to that point at that point itself. Okay, right. Instead of waiting till the end. Okay. So you can definitely interrupt me whenever. I usually what I do, I'll just check if I say continue with the slide. As soon as I complete that slide, then we can, before we move to the next slide, we can take the questions. You can interrupt me. Okay. Okay. Yeah. That's fine. Because then in that case, it will be something like an interactive session. Okay. So
what NPTEL is an educational project of Ministry of Education, Government of India, which started in 2003 with 7 older IITs and IISc Bangalore as the partnering institutions. During the early phase, IITs have been actually creating content. That means recording the contents delivered by the faculty members in the classrooms of IIT. The way they teach it to the IIT students, that is to be recorded and made available. From 2014, we have started online course certification program. That means in addition to the contents, the students will get a feel of the type of activities that takes place in a regular classroom, and will also be able to write an examination at the end of the course. And the certificate which comes from IITs or IISc or other top institutions will be definitely valuable and improve the, you can say, value addition or add value addition to their resume for getting the job opportunities or internship opportunities. We have already crossed 20 years of our journey together, and it's one of the largest interinstitutional projects. During this phase, we have created more than 3,000 unique courses. Okay, individual course count, if you see, it's more than 3,000. With more than 5.5 million people subscribing to our NPTEL HRD channel, through which these contents are distributed for viewing. And if you see the number of views, it is more than 1.6 billion. In total, if you say, we have got more than 62,000 hours of videos, which many of the videos are being created with English subtitles. So what started with a vision to provide high quality, affordable education at large scale, we are now also offering the online certification and also conducting regular workshops so that these contents are being used by the, say, colleges and universities as part of the credit transfer, or to help the learners in self-learning process and be prepared better for the job market. These NPTEL courses are offered through a platform called SWAYAM, which is an acronym, Study Webs of Active Learning for the Young Aspiring Minds. So it's an umbrella body. Say it's a common umbrella through which, created by the ministry, through which all, say, institutes, whoever wants to offer the course in an online format, they will be offering the course through the SWAYAM platform. So I understand that there could be students who are in the school, they would be interested to take some course, and there could be PhD scholars who will be requiring a different set of course. So all the courses that you may look for, covering the complete spectrum of the learners, cannot be, say, offered by a single institute. That is the reason ministry has created different national coordinators under the SWAYAM portal. One of the national coordinator is NPTEL. Okay, this NPTEL is primarily targeted to create and offer the contents targeting the undergraduate and postgraduate engineering courses. But we are also offering equally good number of courses from humanities and social science, basic sciences, that is physics, chemistry, mathematics and all, as well as management. These days, we are also offering the courses from health sciences, your certain law courses, intellectual property, entrepreneurship. All these courses are also being provided through NPTEL. So since NPTEL courses are offered through the SWAYAM, if someone says that the SWAYAM courses are to be taken, you can say that NPTEL courses are SWAYAM courses too. So the online certification process started in 2014, and we follow a MOOCs format. That means it is massive open online courses. The number of students, say the students who are seated in the classrooms at your college, you have a limit, like how many students can attend to the class of a particular faculty at any point of time. That depends on the classroom size. How many what is the sitting capacity? But in a MOOCs format,
that limitation is not there. Since the contents are open and online, that means they are offered over internet, and anyone just having the interest and online connectivity or internet connectivity should be able to access this content. So the number of students who can enroll in any particular course are actually unlimited. You can have 100 or you can have hundreds of thousands of people enrolling at any point of time in a course. And the courses are also structured exactly in the same way how your regular college structure, in the college, how the courses are structured. That means it has a fixed syllabus, it has a start date, end date. On a weekly basis, you have got certain amount of lectures, there is some amount of interaction takes place, maybe weekly quizzes, and at the end, you have got either mid-semester or final semester exam for certification purpose. Exactly, we follow all these concepts here also. And these courses can be taken by anyone, and they can join to the course anytime. Anytime means within the scheduled time, they can learn it at their own pace and time from wherever they are. Okay, I can study during the day, I can study during the night. If I can just learn it from my college, I can learn it from my home, wherever I am, I should be able to enroll into the course and get access to that. Now the courses are offered during two times in a year, one during the January and another starting in July. So in July, right now we are in August, the semester which started from July, these courses enrollment are still open. So the July run and January run, which are aligned with the semesters of your colleges. Okay. Now, if you say that July run courses are being offered now, when did the enrollment start? For July run courses, the enrollment usually opens 2 months ahead of time, that is in May. And for the January run courses, enrollment opens in November. Now, who can take this course and how many courses they can take? Say if you are doing a course on BCA, you can take any course that interests you. If you want to learn, say, a course on Japanese language or say German language, or you want to take something from the computer science, in addition to computer science, you want to take from some other discipline, physics. If astrophysics is very interesting to you, you can take all those courses. So you can join to any course, any number of courses that is of interest to you. And there are no charges. That means you can join to these courses without paying any fee. Whatever you are doing, whether you are a student, you are a faculty member, you are a retired professional, currently working professional, or even a homemaker, whoever it may be, you can join to any course that interests you, and the number of courses where you can enroll is not limited. It is limited by your capacity only. You can join into the course and learn the concept freely without paying any fee, because the Ministry of Education, Government of India is totally funding it. But if you want to write the examination, then you have to register separately by paying a fee to NPTEL portal. Now, if you see that, look at the course features. In your college, you must have a semester like it starts from July, it goes up to say October, November. So there is a fixed duration during which the course will be offered. So our courses are offered in 3 formats. Either the course duration could be 4 weeks, 8 weeks, or 12 weeks. That means 1 month, 2 months, or 3 months duration. And in terms of total hours, how many hours of lectures will be there? It is translated to 10 hours, 20 hours, or 30 hours respectively. Okay, at the rate of 2.5 hours of lecture per week. That means every week you will be having 2.5 hours of lecture to be studied. Now, these 2.5 hours of lectures are not of one single video of 2.5 hours. These are small segments, say like half an hour size videos, which you can easily download and study at your convenient time. Okay, now we follow the 4-quadrant approach. What are these 4 quadrants? Instead of just faculty teaching in front of you in the classroom, these lectures are recorded, and 2.5 hours of pre-recorded lectures
are made available to you on on a weekly basis. Every week that lecture will be made available so that you can study that. Then in a classroom, you have a teacher with whom you will be interacting. So that interaction takes place through a web-based interactive forum. Additionally, the faculty will also come live on YouTube. The way I am interacting with you today, the faculty will be coming and interacting with you when, say, you have taken a course on C++ programming. In that case, once the faculty comes, you all will be connected to the YouTube chat, and if you have got any question you want the faculty to explain to that, you will be posting your queries and the faculty will be responding. So in addition to the web-based interaction, you will also have your periodic interaction with the faculty through YouTube live sessions. Additionally, there are PhD scholars who are there to support you in problem-solving session. Say you are doing a course on C++. The faculty will be talking about the theoretical perspective in the lecture, but you will be given a lot of problems. That means programming problems will be given. How to solve all those things. If you have got any doubt, then to help you in that, there are PMRF scholars, Prime Minister's Research Fellow scholars, who will be conducting the session every week. And if you attend to that, it will be extremely beneficial because you will be able to know how to solve different problems. In a classroom, the faculty may give you something like handwritten notes as a study material. Here also, we do provide you supplementary study material that could be in the form of slides. That is the PowerPoint slides that faculty might have used. The text transcript of the video. That means whatever way the faculty has said, exactly English transcript of that will show you what it is. All these things are part of study materials. And once you go through all these first 3 steps, then you have to complete one weekly assignment, self-assessment quiz, where you can have between, say, 10 to 20 questions related to that week's 2.5 hours of video. You have to solve the problems that are part of that assignment. Each assignment is graded out of 100. That means you have a fixed timeline. Within 10 days timeline, you have to solve the assignment questions. And once you submit, there is a 10 days timeline. Beyond 10 days timeline, on expiry of the timeline, you'll be able to see what is your score out of 100 in that particular assignment. Okay. And a part of this, kindly note that your performance in the weekly assignment will be reflected in your certificate, because some part of your assignment score will be part of your final certificate also. Certification exam features. Proctored in-person center-based exam. That means you may take the course from the comfort of your home. But if you want to write the examination, you have to come to the center. You have to register separately. Then you will be allocated the exam center. You'll go with the hall ticket and a valid identity proof, government issued identity proof, and write the exam in a proctored environment. That means there will be some people from NPTEL who will be seeing that everything is done as per the approved policy. Exam centers are spread across the country, including Patna. We have got Patna. Not only that, there are many other centers in Bihar, okay, from where you can write the examination. The choice of city, while you are filling up the form, then you will be selecting what is your choice of city. So based on that, we will be allocating your exam center. In each semester, you will be having 3 exam dates, and there will be 2 exam sessions every day, on every exam day. That means one in the morning between 9 to 12, another between 2 to 5. There are 2 sessions on each date, so total 6 sessions in a semester. And if you are interested, you can actually write exam for 6 courses in a semester. As we say that, okay, if you want to learn the course, you can join the course without paying any fee. But if you want to write the exam, you have to pay certain fees. The fee amount is 1,000 rupees per course, irrespective of the course duration.
That is whether the course duration is 4 weeks, 8 weeks or 12 weeks, the fee remains same. However, if a candidate belongs to SC/ST category or has got some disability with more than 40% disability, in that case, these candidates can get a fee waiver to the extent of 50%. That means these candidates will be registering for the examination by paying 500 rupees exam fee. Once the exams are conducted, we say that exams are conducted in exam center. How the exams are conducted? These are conducted in two different modes. Either it is online or offline. In case of online, the question paper will be coming on the screen and you have to answer in the same screen only. Okay. Whereas in case of offline, the question papers will only be appearing in your screen, but you will be given normal answer script. Okay. Where you have to use your pen and write the answers. Okay, this is the basic difference. In online and offline, the questions appears on the screen only. In online, you will be responding in the computer itself, whereas in offline, you will be writing onto the piece of paper. Okay, once the exam date is over, within 30 days from that, we try to release the examination score, your results. Along with that, we will also be releasing the soft copy of the certificate. Okay, these certificates will be signed by the institute that is offering the course. Say your course, you have taken a course which is offered by, say, IIT Guwahati. In that case, IIT Guwahati faculty or the coordinators of IIT Guwahati will be signing the certificates. And it will definitely bear the logo of NPTEL and SWAYAM. Okay. These certificates will also carry your roll number and QR code. Because if you want to submit this certificate to any agency who wants to verify whether this is an authentic certificate or not, they can simply use a mobile QR code scanner, which will take them directly to the NPTEL portal, and they'll be able to see the certificate from the NPTEL portal itself. Okay. Then the certification criteria. So every week you have got a weekly assignment, and there are courses which are 4 weeks, 8 weeks or 12 weeks. That means if you are taking a 12-week course, there are 12 assignments. Each assignment is graded out of 100. That means 1200 marks are involved in that. Okay, you are submitting every week. Then at the end, for certification purpose, what we'll do, we'll carry the 25% weightage of the final certificate from the average assignment score. How will we calculate? If you are taking a 12 weeks course, then the best 8 assignment scores, say you have submitted all the assignments, then we'll check which are the best assignment scores, 8 numbers, calculate that. Out of 800, each with 100 marks, out of 800, what is your total score? Then take an average. Out of 100, what is your score? And 25% or 1/4 of that is directly taken to the certificate. And here you have to get at least 10 marks, okay, to get a certificate finally. Final examination will be, say, 100 marks is the final exam score. Then whatever you get there, 75% will come from the final exam score. Okay, that means if you have got 80 marks out of 100 in the final exam, we'll consider that you have got 60 marks out of 75. We'll be scaling it down. But for the final examination, where say the courses are like C, C++, Java, Python, Verilog, such courses which are programming in nature, you will have additional test, that is non-proctored programming test before the examination. Once the exam dates are marked, the exam dates are published much ahead of time. Just before the exam, there will be a particular date on which we'll be conducting your programming test. That means one during the day, one during the night, you will be given something like what you do in every weekly assignment. You will have to go to the portal, and in the portal at the designated time, exam time, you will be having a programming problem given there.
a set of programming problems which you have to solve it within the timeline. Since there are 2 time slots, you can write it in any of the time slot that is convenient for you. If you feel that, okay, you want to write it in both the sessions, you can do that. Whichever score is higher, that will be counted. And for the programming courses, the final examination will carry only 50% marks, and the remaining 25% marks will come from your non-proctored programming test. This test, you can take it from your college, you can take it from your home also at night. Okay. But the condition for getting a certificate is that you have to get 40% score individually in every segment. Okay. Now, based on the consolidated score, if your total score is above 40, then only we say you are eligible to get a certificate. Less than 40, we say you are unsuccessful and we do not give you even a what's called your participation certificate. Scores between 40 to 59, we call it is successfully completed. Between 60 to 100, you will be getting the certificate which will carry a elite tag. This word will be written on the top of the certificate. I'll show you. Between 75 to 89, in addition to the elite word, there will be a silver medal symbol printed on your certificate, and we call it elite silver. For scores between 90 to 100, you will be having elite and a gold medal symbol printed on your certificate, which we call elite gold. If your score is within the top 1% to 5% of the successful candidates, your certificate will also carry a topper seal, what is shown here, top 1%, 2% or 5%. So before I move to the next slide, I'll take a question. Saurabh Kumar is asking, sir, what is non-proctored test? Non-proctored test means this is a programming exam which will be done by you, where there will not be any supervision by NPTEL staff. Okay. Final exam which is conducted in your exam center, it is proctored. Why it is called proctored? Because there will be NPTEL staff who will be monitoring your activities. But in case of programming courses, before the exam, as I said, there will be a programming test. At that point, since you can take the course from your home or from your college, since this is conducted in 2 sessions, there will not be any member of NPTEL who will be supervising whether you are doing it properly or not. So that is why it is called non-proctored. I hope, Saurabh, your point is clear now. This is how a sample certificate looks like. So if you have got any questions, you are most welcome to post it there so that we can take and respond as we progress. So this is the sample NPTEL certificate, course certificate. It will bear your photograph. So definitely, since it is carrying your photograph, you should always give a formal photograph, because you may produce this certificate not only to your college, but also you may actually submit it to a prospective employer. So giving a formal photograph is always advisable. It will carry your name, the course you have attended, your consolidated score and individual scores in your online assignment, that is online assignment out of 25, what is your score, and in the proctored exam out of 75, what is your score, that will be reflected. Also, when this course was offered and how many candidates were successful in this particular session, all this information will be provided. You will have a NPTEL logo, SWAYAM logo, as well as the QR code and your roll number. So by QR code, if you produce that certificate to me, I don't have to check, I can simply check the authenticity of the certificate by using my mobile phone and a QR code scanner. QR code will just give me the link of the certificate to our NPTEL server. So wherefrom I will be able to see the original certificate. Now, important points to remember, particularly for the examination point of view. We will be identifying each of the learners by your unique email ID. Okay, so as long as you use the same email ID, you will be able to know, we will be knowing that, okay, if this is the, say, Saurabh Kumar has used a particular email ID for enrollment in a particular course.
As long as Saurabh uses that same email ID in the subsequent semester, it will be easy for us to track what all courses he has done, as well as the Saurabh will also be able to identify what all courses he has completed. Amrit, you are asking, समझ में नहीं आ रहा है, तो what you have not understood, if you can tell me, I'll be able to answer. I can use a mix of Hindi, English, so that आपको समझ में आ जाए. ठीक है, थोड़ा लिख दीजिए कौन सा समझ में नहीं आया. ठीक है. और एक चीज आपको देखना है कि एग्जाम डेट्स जैसे आप एनरोल करेंगे, एनरोलमेंट के पहले आपको देखना है कि उस कोर्स के एग्जाम डेट्स, मतलब आपने सपोज 3-4 कोर्स आपको लेना है, हमने बोले हैं क्या, ऑन ए पर्टिकुलर डेट यू हैव गॉट 2 एग्जाम सेशन. तो आपको वो देखना है कि आप 2 से ज्यादा इस टाइप का कोर्स सिलेक्ट ना करें जिसके एग्जाम डेट सेम हो, क्योंकि आप मैक्सिमम एक दिन में 2 ही कोर्स के एग्जाम लिख सकते हैं. ठीक है. एंड यूज द सेम ईमेल आईडी फॉर द कोर्स एनरोलमेंट एंड एग्जाम रजिस्ट्रेशन. सपोज आपने एनरोल तो किया है एक ईमेल आईडी से, लेकिन एग्जाम रजिस्ट्रेशन के दूसरा ईमेल आईडी पे अभी सर्टिफिकेट मिलेगा आपको. एनरोलमेंट करने के बाद आपने जो वीकली असाइनमेंट सबमिट किए वो नंबर से 25% आएगा और फाइनल एग्जाम से आपको 75% आएगा. अगर आपने 2 ईमेल आईडी चेंज कर दिया है, देन इन दैट केस आपको एनरोल असाइनमेंट के मार्क्स 0 हो जाएंगे, क्योंकि वो हम टैग नहीं कर पाएंगे. ओके. Someone is telling those who are getting less than 40% marks, can he get certificate or not? No, what I said is that you have to get 40% individually in final exam as well as in your assignments, average assignment score. That means out of 25, you should get 10, and out of final exams 100, you should get 40, which is equivalent to 30 marks out of 75. Until and unless you get 30 and 10 separately in the final exam and your assignment, you will not get a certificate. Okay. So it's not only getting 40% marks individually, totally, you have to get 40% marks individually, and until and unless you get that 40% marks, even if you write the exam, you will not get a certificate. What I mean to say is that suppose you have not got 40% marks in your assignment, you have got say 8 marks out of 25. So even if you write the exam and get 100 out of 100 in the final exam, you will not be getting a certificate. Okay. Programming web developer is asking, sir, exam online mode में कब होगा? Exam timeline आपको हम दिखा देंगे. Next slide में हम आपको वो बताएंगे हैं. इसका फायदा क्या होगा वो तो आपको थोड़ा देर बाद में पता चलेगा क्या फायदा है. ठीक है. सर सबका सर्टिफिकेट ऑनलाइन मोड टू मिलेगा? यस, यू विल बी गेटिंग. आप थोड़ा ध्यान से सुनिए कि मैंने बोला कि सारे जो सर्टिफिकेट्स है ऑनलाइन पे ही मिलेगा. Puneet Kumar is asking, is non-proctored exam will be conducted in NPTEL centers or in exam online class? पुनीत कुमार जी, आप शायद मिस किया, मैंने एक बार नहीं कई बार कहा कि नॉन प्रॉक्टर्ड एग्जाम आप अपना कॉलेज में ले सकते हैं, आपका होम पे ले सकते हैं, दिन पे ले सकते हैं, रात को ले सकते हैं. ठीक है. तो ये कई बार मैंने बोल चुका हूं कि नॉन प्रॉक्टर्ड एग्जामिनेशन जो है वो दिन में एक बार होता है, रात को एक बार होता है. आप कहीं पे भी लिख सकते हैं और इस सेंटर में नहीं है, इसीलिए ये नॉन प्रॉक्टर्ड है. ठीक है. और एक चीज आपको ध्यान रखना है, कुछ कोर्सेज के लिए आपको कैलकुलेटर जरूरी पड़ता है. यूज ऑफ कैलकुलेटर इज एसेंशियल, और फिजिकल कैलकुलेटर आपको एग्जाम हॉल में यूज करने नहीं देंगे. तो क्या करना है, आपको ऑनलाइन कैलकुलेटर यूज करना है. कहाँ पे जाएंगे आप? TCS, ये जो लिंक मैंने दिया, इस लिंक के अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको कैलकुलेटर मिलेगा. अगर आपका कोर्स में कैलकुलेटर की जरूरत पड़ते हैं तो
आपको इसी का प्रैक्टिस करना पड़ेगा। हर हफ्ते जब आपको असाइनमेंट मिलता है तो आपको ये यूज अगर करेंगे तो एग्जाम हॉल में आपको ये नया चीज नहीं लगेगा। ओके, the value of certificate are very much important in our life. Yes, you are true. Okay, then comes next. किसी ने पूछ रहे थे कि एग्जाम कब होगा। देखिए, हम लोग जो कोर्स देते हैं वो 3 टाइप के हैं, एक 4 वीक का है, एक 8 वीक का है और 12 वीक का भी है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, 4 वीक और 8 वीक जो कोर्स है उसको दो सेट में बांट लेते हैं। तो पहले वाला सेट है फर्स्ट सेट ऑफ 4 वीक्स और फर्स्ट सेट ऑफ 8 वीक्स और 12.5 वीक का कोर्स। ये हम एक्चुअली 24 जुलाई से स्टार्ट कर दिया है। और बाकी जो 4 वीक्स और 8 वीक्स का जो सेकेंड सेट है वो 21 अगस्त से चालू होगा। अभी फर्स्ट सेट का 4 वीक्स और 8 वीक्स उनका एग्जाम होगा 24 सितंबर। और जो बाकी कोर्स है 12 वीक 4 वीक्स 8 वीक्स, सेकेंड सेट का 4 वीक्स 8 वीक्स, 12.5 वीक का कोर्स उनका एग्जाम होगा आपका 28 और 29 अक्टूबर। ओके, अभी एनरोलमेंट तो बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं, देख लेते हैं एक बार। स्मार्ट वॉच अलाउड इन द एग्जाम? नो, currently we are not even allowing any watch in the exam hall. It's not only NPTEL, अगर आप कोई भी नेशनल लेवल का एग्जाम देंगे आपको वॉच परमिट नहीं करेंगे। ओके, how much the NPTEL will help you in a career and all, we'll explain this. Please थोड़ा वेट कीजिए। एग्जाम के लिए कॉस्ट फी कितना लगता है? मुझे लगता है कि सर आप लोग ध्यान से नहीं सुन रहे हैं। मैंने क्लियरली बोला है क्या एग्जाम फी ये जो है 1000 रुपीज है, वो मैंने कई बार कह चुका हूँ। ओके, फिर है आपके थैंक्स सौरभ कुमार जी, यू आर एक्चुअली एंजॉयिंग द सेशन, दैट्स वेरी गुड। ओके, the exam taken by you, which mode I can apply? Sir, the exam taken by you, which mode I can apply? Which mode I am not very sure आपने क्या बोलना चाहा। एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म है, वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिलअप करना है। और एग्जाम जो मैंने बोला है वो ऑनलाइन पे भी हो सकता है, ऑफलाइन पे भी हो सकता है। वॉइस नहीं आ रहा है तो शायद प्रॉब्लम आपका एंड पे है। ओके, ये ऑलमोस्ट 2 घंटे का प्रोग्राम है, उसी हिसाब से हम चलेंगे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा है। तो इसी हिसाब से अगर आंसर देंगे तो नेचुरली थोड़ा डिले तो होगा। ओके, अभी जो 24 जुलाई के जो कोर्स चालू हुए हैं उनका लास्ट डेट था एनरोलमेंट 31 जुलाई। ओके, विजय कुमार जी मैंने बोल चुका हूं, आप लोग सुनिए कि एग्जाम फी 1000 रुपीज है। क्वेश्चन लिखने का पहले तो ध्यान दीजिए हम क्या बोल रहे हैं। अब ध्यान नहीं उधर नहीं रख रहे हैं, फिर बाद में पूछते रहते हैं। ओके, एग्जाम फी देने के लिए आपको ऑनलाइन थोड़ा सब्र कीजिए। जब हम एग्जाम फी के बारे में बताएंगे कहाँ पे एनरोल करना है, थोड़ा वेट करके क्वेश्चन पूछिए, तो तभी हम वही क्वेश्चन का जवाब देंगे जो आंसर एक्चुअली जो पार्ट हमने डिस्कस कर चुके हैं। ओके, और मिस्टर साहिल, आई एम टेलिंग यू दैट हाउ इट इज यूजफुल, यू हैव टू वेट टिल द एंड। Okay, you cannot, once a baby is born, you cannot tell whether baby will be scientist or what he will be. So until and unless you listen to the whole program, how can I tell you how it will be useful? So you have to keep patience on that. Okay, so जो timeline था 24th of July ऑनलाइन कोर्स जो स्टार्ट हुए हैं इन एंड था सारे कुछ बताया जाएगा। वाटर बोतल आप ले सकते हैं लेकिन वो बताएंगे जब टाइम आएगा ना। सो 24th ऑफ सितंबर आपके एग्जाम है। जो कोर्सेज 24th ऑफ जुलाई से स्टार्ट हुए हैं उनकी एनरोलमेंट क्लोज होना था 31st ऑफ जुलाई, लेकिन हम लोग उसको एक्सटेंड किए हैं अप टू 7th ऑफ अगस्त। तो 7th ऑफ अगस्त अगर हमने एनरोलमेंट क्लोज करना है, ऑलमोस्ट 601 कोर्सेज ओपन है, तो आपको तुरंत, जो अगर आपने एनरोल नहीं किया तो आपको तुरंत एनरोल करना चाहिए। अभी जैसे आपने एनरोल किया तो फिर एग्जाम रजिस्ट्रेशन भी करना है। एग्जाम रजिस्ट्रेशन जो जुलाई सेशन का वो ओपन है
आपको 20 जून से एनरोलमेंट ओपन है और ये क्लोज हो जाएगा फर्स्ट सेट ऑफ कोर्स के लिए आपके, दैट इज फर्स्ट सेट ऑफ 4 वीक्स, फर्स्ट सेट ऑफ 8 वीक्स, और सारे 12 वीक का कोर्स के जो है एग्जाम रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 14 अगस्त। तो उसी हिसाब से आप एग्जाम रजिस्ट्रेशन करेंगे। कहाँ पे करेंगे वो दिखा रहे हैं हम। और जो बाकी कोर्स है जो एग्जाम होगा 28 और 29, और उसके एग्जाम रजिस्ट्रेशन क्लोज होगा 11 September। दैट इज सेकेंड सेट ऑफ 4 वीक्स एंड सेकेंड सेट ऑफ 8 वीक्स, उनके जो एग्जाम रजिस्ट्रेशन वो क्लोज होगा 11 September। इसलिए पूछ रहा है एक ही बार एक ही क्वेश्चन, सर 150 रुपया देना एग्जाम फी? नो, इट इज 1000 rupees एग्जाम फी इफ यू आर SC ST और फिजिकली डिसेबल विथ 40% डिसेबिलिटी, तभी आपको 500 रुपया देना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज 1000 रुपीज सबके लिए। जो मैंने बताया अभी 601 NPTEL कोर्सेज एनरोलमेंट अभी चालू है, वो 7 अगस्त तक चलेगा। 7 अगस्त 5 बजे तक एनरोलमेंट चलेगा। I think the students who are enrolling, who are attending this, they are not at all listening to the what I am saying and asking the same questions. So I'll avoid that questions. Fee कितने हैं? I think I have talked at least 10 times. If you have not listened to that, please request your other students जो आपको बताएगा। और लास्ट डेट जो है सचिन जी, ये मैंने अभी लास्ट स्लाइड में तो दिखाया। Sir, I think we could take these questions at the end. Okay. We could continue with this. Okay. Students, please ask the questions at the end so that we could at least hear what sir is saying, and then we can collectively ask the questions. Yes, because now they are not listening to that and asking the same questions repeatedly by the same many people. Okay. Yeah, I could see that. Okay. Yeah. Now let us see. Students, Suppose you want to join into a course. अब पहले क्या करेंगे? पहले आप जाएंगे से nptel.ac.in, जहां पे आपके कोर्स के इंफॉर्मेशन मिलते हैं। आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, देखिए इधर लिखा है लिस्ट ऑफ कोर्सेज। अगर आपको नहीं पता है क्या 601 जो कोर्स क्लोज हो रहा है 7 तारीख को, कौन सा कोर्स है, कौन सा डिसिप्लिन का कोर्स है। सपोज आप BCA करना चाहते हैं, BCA कर रहे हैं, आपको कंप्यूटर साइंस पे दिलचस्प है, ठीक है, कंप्यूटर साइंस से कौन सा कोर्स अवेलेबल है। तो इस जो शीट है एक्सेल शीट, एक्सेल शीट को आप ध्यान से देखिए। इसमें देखिए सारे कोर्स के लिस्ट दिया हुआ है, सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक, सारे कोर्स। अभी एक कोर्स कहाँ से, मतलब कौन सा डिसिप्लिन का कोर्स है, कोर्स का नाम क्या है, कौन फैकल्टी पढ़ा रहे हैं, कौन सा IIT से है, कितने दिन के कोर्स है, 4 सप्ताह, 4 वीक्स, 8 वीक्स और 12 वीक्स का कोर्स है। ये कोर्स नया है, मतलब ये फर्स्ट टाइम ऑफर किया जा रहा है, और या पहले ये कोर्स ऑफर किया गया था लेकिन रिपीट कर रहे हैं इसको, तो जिसको हम रीरन कहते हैं। तो किस टाइप का कोर्स है, कब चालू होगा, जो इम्पोर्टेंट डेट्स, कब एनरोलमेंट कब ओपन हो रहा है, कब कोर्स चालू हो रहा है, कब एनरोलमेंट क्लोज हो रहा है, एग्जाम रजिस्ट्रेशन कब क्लोज हो रहा है, सारे डेट्स इधर दिया हुआ है। नॉट ओनली दैट, आपको ये भी पता चलेगा एक कोर्स अंडर ग्रेजुएट स्टडीज के लिए है और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए है, मतलब बीटेक लेवल का है या एमटेक लेवल का है, और एक कोर्स कोर कोर्स है या इलेक्टिव कोर्स है। अगर एक कोर्स फैकल्टी के लिए, फैकल्टी डेवलपमेंट कोर्स के लिए मान्यता दिया गया है तो वो भी लिखा हुआ है। और जो हम बताएंगे थोड़ा देर में कि आपके जो डोमेन सर्टिफिकेट, अगर एक कोर्स एप्लीकेबल है डोमेन के लिए तो कौन सा डोमेन के लिए ये एप्लीकेबल है, कोर्स के ज्वाइनिंग के लिंक सारे कुछ एक ही शीट में दिया हुआ है। अगर आपको इंटरेस्ट है डाउनलोड कीजिए, सिलेक्ट कीजिए कोर्स। अगर सिलेक्ट सपोज करते हैं कोई कोर्स जो रीरन में है, रीरन मतलब एक कोर्स पहली बार नहीं दिया जा रहा है, पहले भी जा चुका है, तो इसमें क्या कर सकते हैं आप nptel.ac.in पे जाइए, जाके क्या करेंगे, NPTEL जो इस प्रोग्राम है इसके अंदर से देखिए, आई कैन सर्च द कोर्स नेम। सपोज मैंने क्लाउड कंप्यूटिंग का एक कोर्स लेना है, तो क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स जो है अभी ओपन है एनरोलमेंट के लिए। तो हम क्या क्या देख सकते हैं इस पेज में, देखिए इसमें एक रीरन कोर्स है, इसका मतलब वीडियो पहले से हम देख सकते हैं। अगर जून में हमने डिसाइड कर लिया कि हम नेक्स्ट सेमेस्टर में जुलाई से हम कोई एक रीरन कोर्स लेंगे जिसके
वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, तो जुलाई तक हमें इंतजार करने का जरूरत ही नहीं है। हम क्या करेंगे, हम जून से ही पढ़ना चालू करेंगे। अब पढ़ने के लिए क्या क्या चाहिए हमको, एक वीकली असाइनमेंट भी सबमिट करना है। तो वो किस टाइप का असाइनमेंट होगा, वो क्वेश्चन आता है। तो आप क्या कर सकते हैं, इधर आके डाउनलोड सेक्शन पे आप देखिए वीडियो तो इधर अवेलेबल है। सारे लेक्चर जो है वीकली लेक्चर आप देख सकते हैं, और वीकली लेक्चर के बाद ट्रांसक्रिप्ट वगैरह कहाँ से मिलेगा, रीजनल लैंग्वेज पे ट्रांसलेशन, जो सबटाइटल कैसे मिलेगा, वो सब कुछ लिखा हुआ है इधर। अब वीडियो इधर से देखिए। उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं अब हम ये करेंगे, पिछले वाला टाइम पे जो ऑफर हुआ था उस टाइम के असाइनमेंट किस टाइप का था, उसका हम थोड़ा अंदाजा लगाएंगे। जाइए इधर डाउनलोड सेक्शन में असाइनमेंट है, क्लिक कीजिए इधर। इधर देखिए पिछले बार असाइनमेंट जो इशू हुआ था उसका एक कॉपी दिया हुआ है। लेकिन वी हैव टू कीप इन माइंड, ये जो असाइनमेंट है ये सिर्फ आपको सैंपल दिखाने के लिए है। ये ओरिजिनल असाइनमेंट था लेकिन अभी ये सैंपल है, क्योंकि इस टाइम जो असाइनमेंट होगा ये असाइनमेंट नहीं रहेगा, उसमें असाइनमेंट कंप्लीटली चेंज हो जाएगा। ठीक है, समझ गए? तो ये आपको जस्ट एक आइडिया देने के लिए है। अगर आप देखना चाहते हैं, से सपोज वीक 2 का किस टाइप का असाइनमेंट था, डाउनलोड कीजिए, देखिए वीक 2 में क्लाउड कंप्यूटिंग के किस टाइप का असाइनमेंट है, ये आपको एक अंदाजा लगाएगा। ओके, फिर ये सब देखने के बाद आपको एनरोल करना है। कैसे एनरोल करेंगे, जाइए इधर swayam.gov.in पोर्टल पे। इधर अगर जाएंगे आप, देखिए पहले एक क्लिक कीजिए। से सपोज हमने क्लाउड कंप्यूटिंग कोर्स में एनरोल करना है से। ओके, अगर हमको कोर्स नेम पता है तो ठीक है, हम इधर लिखेंगे, और नहीं तो हम क्या करेंगे, ऑल कोर्सेज पे क्लिक करेंगे। फिर इधर आपको जो भी कोर्स अभी स्वयं पोर्टल में ओपन है, चाहे वो एनपीटीएल का हो, सीईसी, यूजीसी, सभी का सारे कोर्स लिस्ट इधर दिया हुआ है। लेकिन अगर आप एनपीटीएल कोर्स लेना चाहते हैं तो आप फिल्टर कीजिए इधर एनपीटीएल, कोर्स ड्यूरेशन सिलेक्ट कीजिए। सपोज आप 12 हफ्ते का एक कोर्स लेना चाहते हैं, सिलेक्ट कीजिए। अगर आप लोग बीसीए पढ़ रहे हैं तो आपको शायद इंटरेस्ट होगा कंप्यूटर साइंस में, तो इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी सिलेक्ट कीजिए। फिर इधर कंप्यूटर साइंस सिलेक्ट कीजिए। तो आपके इधर आप एनपीटीएल से इस सेमेस्टर में जो भी 12 हफ्ते का कोर्स आ रहा है कंप्यूटर साइंस के, सारे कोर्स की लिस्ट इधर पब्लिश किया हुआ है। ओके, देखिए कौन सा कोर्स आपका चॉइस में आता है। से साइबर सिक्योरिटी, प्राइवेसी, से डीप प्लानिंग। अगर मुझे ये इंटरेस्ट है, दिलचस्पी है, हम ये कोर्स ज्वाइन करेंगे, तो हम क्या करेंगे, इसमें देखिए लिखा है 12 हफ्ते का कोर्स है, 24 जुलाई से चालू हो चुके हैं, एनरोलमेंट खत्म होगा 7 अगस्त को, एग्जाम डेट 28 अक्टूबर है। तो हम क्लिक करते हैं इसको, then it will take me to the next page where I will be having more details about this course. देखिए ऑलरेडी more than 11,000 students have enrolled into the course. कोर्स के बारे में डिटेल्स इधर दिया हुआ है। राइट साइड में वो भी लिखा हुआ है, ये कंप्यूटर साइंस का कोर्स है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन के कोर्स है, डेटा साइंस, रोबोटिक्स रिलेटेड कोर्स है, 3 क्रेडिट दिया जाएगा, इंपॉर्टेंट डेट्स है। और अगर फैकल्टी ये कोर्स लेते हैं तो उनके लिए ए एफडीपी कोर्स के लिए मान्यता दिया जाएगा। ओके, मैंने देखने के बाद सिलेबस भी दिया हुआ है कोर्स का, कौन सा किताब रेफर करना है, फैकल्टी को होना है, सब कुछ दिया हुआ है। इसके बाद हमको ज्वाइन करने के लिए जस्ट क्लिक करना है ज्वाइन बटन। ये हमको लेके जाएंगे ज्वाइनिंग पेज पे। ज्वाइनिंग के लिए हमको मल्टीपल ऑप्शंस है, लेकिन हम प्रेफर करेंगे, मेरा अगर ईमेल आईडी है गूगल से तो जीमेल आईडी हम यूज करेंगे। देन आई कैन सिलेक्ट माय जीमेल अकाउंट, क्लिक ऑन टू द गूगल, सिलेक्ट माय जीमेल अकाउंट। तो कुछ डेटा वो जो है वो डायरेक्टली जीमेल से ले लेंगे, और कुछ डेटा हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है, कुछ डेटा ले लिया। अभी हमें सिलेक्ट करना है एज ग्रुप। आप सिलेक्ट कीजिए आपका एज ग्रुप कौन सा है, मेल फीमेल, कंट्री कहाँ पे रहते हैं, आपका पिन कोड क्या है, उसी हिसाब से स्टेट और सिटी और डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेंगे। देन व्हाट आर यू, योर प्रोफेशन। इफ यू आर ए स्टूडेंट सिलेक्ट स्टूडेंट, इफ यू आर ए फैकल्टी सिलेक्ट फैकल्टी। देन हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, आपके सबसे हाईएस्ट क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप बीसीए पढ़ने के लिए आया है तो आपका नेचुरली हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है 10+2 और प्री यूनिवर्सिटी, वो सिलेक्ट कीजिए। कौन सा ईयर में आप ग्रेजुएट करेंगे,
से अगर आपको 2030 तक का टाइमलाइन दिया हुआ है जब आप ग्रेजुएट करेंगे, उसी हिसाब से आप से अभी ज्वाइन किया है, आप 2026 पे ग्रेजुएट करेंगे, सिलेक्ट कीजिए वो वाला। देन कम्स ABCID। ABCID होता है अगर NPTEL बिना अगर आप दूसरे भी कोऑर्डिनेटर का कोर्स लेंगे तो आपको ABCID सिलेक्ट करना पड़ेगा। यू हैव टू क्रिएट द ABCID थ्रू योर डिजिलॉकर। ओके, अदरवाइज NPTEL में आपके जो ईमेल आईडी है वही हम देखेंगे। पार्ट ऑफ स्वयं लोकल चैप्टर, अगर आप NPTEL से फैकल्टी और स्टूडेंट है, नेचुरली आपका कॉलेज हो सकता है NPTEL से जुड़े हुए हैं, तो वो लिखिए कि आपका कॉलेज NPTEL का पार्ट है या नहीं। ये कॉलेज जो है Cimage, ये कॉलेज लोकल चैप्टर है तो सिलेक्ट कीजिए यस। देन कौन सा स्टेट है, हम सिलेक्ट करते हैं बिहार। देन चूज ए कॉलेज, हियर आई कैन राइट CIMAE। ये कॉलेज का नाम मुझे मिल गया, Cimage प्रोफेशनल कॉलेज। आपका रोल नंबर दीजिए, कौन सा डिग्री आप परस्यू कर रहे हैं, डिपार्टमेंट सिलेक्ट कीजिए। हमने इधर कुछ चुने हुए डिपार्टमेंट दिए हैं जो कॉमन है सारे इंस्टीट्यूट में, ठीक है। तो उसी हिसाब से जो डिपार्टमेंट लगता है आपका क्लोज है, ओके, तो उसी हिसाब से सिलेक्ट कीजिए डिपार्टमेंट। देन यू सिलेक्ट योर स्टडी ईयर, कौन से ईयर में आप पढ़ रहे हैं, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर। ये दो चेक बॉक्स को क्लिक कीजिए, देन ज्वाइन द कोर्स। जैसे आप ज्वाइन करेंगे, एक कोर्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, तो आई शुड बी एबल टू सी फर्स्ट 2 वीक्स का कंटेंट। डियर स्टूडेंट्स, यू रियली नीड टू नो वन थिंग कि नौकरी आपको ऐसे नहीं मिलते हैं। आप जो कॉलेज में पढ़ते हैं वो कॉलेज पढ़ाई करना और जो इंडस्ट्री में जो मांगते हैं, जिस टाइप का स्किल सेट मांगते हैं, वो थोड़ा डिफरेंट होता है। क्योंकि इंडस्ट्री में रेगुलर जो लेटेस्ट ट्रेंड आता है उसी हिसाब से इंडस्ट्री काम करते हैं। तो आपने इधर पढ़ के तो कुछ गया, नौकरी भी लग गया, लेकिन कल अगर इंडस्ट्री में कुछ चेंज हो गया टेक्नोलॉजी पे, तो आपको खुद पढ़ना पड़ेगा। वो आपके लिए कोई टीचर नहीं होगा जो आपको वो सब्जेक्ट पढ़ाएंगे। तो ये आपका हेडेक होगा। अगर आपको नौकरी बचाना है तो आपको खुद को पढ़ के सीखना है। इधर जब आप कॉलेज में पढ़ रहे हैं, आपको टीचर आपको सब कुछ सिखा रहे हैं, लेकिन वो कितने दिन चलेगा, 3 साल 4 साल, उसके बाद तो आपको खुद को अपना पैर पे खड़ा होना पड़ेगा। तो अगर आप वैल्यू सोचेंगे तो यही तो टाइम है जो आपको दिखाना है कि हाँ, हम खुद कर सकते हैं। ये नहीं कि हमको स्पून फीड करेगा तो तभी हम कर पाएंगे। तो एक वर्ड में मेरा आंसर रहेगा, सचिन जी, आपके लिए डिग्री का क्या वैल्यू है। ओके, ये डिग्री नहीं है, फर्स्ट ऑफ ऑल इज ए कोर्स। इंडस्ट्री जो जिस लेवल से चेंज हो रहा है, अपना एकेडमिक कॉलेज की जो सिलेबसेस है उतना फ्रीक्वेंटली चेंज नहीं होते हैं। तो यू रियली नीड टू लर्न ऑन योर ओन कि अगर हमने नहीं पढ़ा तो नौकरी हमको क्यों देंगे। अगर आपको पास से कॉलेज में आपका क्लास में 100 बच्चे हैं, सभी ने एक ही टाइप का पढ़ा है, लेकिन जो एम्प्लॉयर आएगा वो आपको क्यों लेगा, वो क्यों दूसरे को क्यों नहीं लेगा। वो तभी आपको लेंगे जब देखेंगे कि आपको जो रिक्वायरमेंट है उससे भी ज्यादा कुछ कर सकते हैं, अपना खुद कुछ आप कर सकते हैं, तो उसी हिसाब से आपको नौकरी मिलेगा। और नौकरी लेने के लिए नॉट ओनली इफ यू आस्क सेम क्वेश्चंस टाइम एंड अगेन, दैट इंडिकेट्स दैट यू आर नॉट सीरियस। जो एम्प्लॉयर है वो आपको वही देखेगा, तो हाउ सीरियस यू आर। आपको जो एटीट्यूड है दैट इटसेल्फ विल टेल हाउ सीरियस यू आर। यू रियली नीड टू नो कहाँ तक, किस हद तक आपको बोलना है, आपको बॉडी लैंग्वेज क्या होगा, कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल, रेज्यूम कैसे बनता है, ढेर सारे कुछ होता है नौकरी मिलने के लिए। और ये सारे चीज जो है ये कॉलेज में एब्सोल्युटली एसेंशियल नहीं है जो आपको पढ़ाया जाएगा। ये आपके इंटरेस्ट में आपको खुद कहीं से भी सीखना है अगर आपको नौकरी मिलना है तो, ठीक है ना। सपोज मैंने कोर्स पे ज्वाइन किया है, कोर्स पेज में क्या क्या है, कोर्स पेज में देखिए, पहले आपको अगर फर्स्ट टाइम आप है तो आपको मदद करने के लिए यू हैव गॉट ए फ्यू वीडियोस, हाउ डज एन NPTEL ऑनलाइन कोर्स वर्क। आप ये वीडियो थोड़ा देख सकते हैं, ओके। देन आपके कोर्स ऑलरेडी सेकेंड वीक में आ चुके हैं, तो फर्स्ट वीक में अगर आप जाएंगे
क्योंकि आपको तो फर्स्ट वीक से ही पढ़ना है। तो फर्स्ट वीक में जाएंगे, कुछ वीडियोस ऑलरेडी दिया हुआ है, छोटा छोटा वीडियोस। अब देखिए, एक वीडियो हम क्लिक करेंगे तो वीडियो इधर ओपन होगा। इसके साथ साथ आपको टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट भी मिलेगा। मतलब आपको अगर इंग्लिश फॉलो करने में थोड़ा भी दिक्कत होता है तो आपको टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्ट भी है, तो आप उसी हिसाब से देख सकते हैं। देन और क्या है, आपको वीकली स्ट्रक्चर में जैसे आपने पढ़ा, देन यू हैव टू आस्क द क्वेश्चंस। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछने के लिए आपको कहाँ पे पूछना है, इधर आप आस्क के क्वेश्चन बटन पे क्लिक कीजिए। फिर इधर एक वेब फोरम है जहाँ पे सारे बच्चे जो एक कोर्स में एनरोल हुए हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं। तो आप भी इधर क्वेश्चन पूछिए, और दूसरे जो स्टूडेंट्स हैं जो क्वेश्चन पूछे हैं, जो टीचर ने रिस्पॉन्ड किया है, वो रिस्पॉन्स भी देखिए, तो ढेर सारे आपको डाउट्स क्लियर हो जाएगा अपना। इसके बाद और क्या है, देखिए फर्स्ट क्वाड्रेंट बोले थे हम लोग वीडियो है। सेकेंड क्वाड्रेंट हम बोले थे कि आपको डाउट क्लियरिंग के लिए इधर आस्क के क्वेश्चन है। थर्ड क्वाड्रेंट आपको सप्लीमेंट्री स्टडी मटेरियल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट है आपके असाइनमेंट। देखिए असाइनमेंट पे अगर क्लिक करेंगे तो उस वीक का असाइनमेंट दिया हुआ है, इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है, आप विद इन ये टाइमलाइन भी दिया हुआ है। ये टाइमलाइन के अंदर आप सबमिट करेंगे तो आउट ऑफ 100 आपके जो स्कोर है वो स्कोर आपको दिखाया जाएगा। ओके ओके, तो ये सारे कुछ आपको ड्यूरिंग कोर्स रन टाइम आपको एक्टिविटी करना है। वीकली वीडियो पढ़ना है, क्वेश्चन है तो क्वेश्चन पूछिए, असाइनमेंट सबमिट कीजिए, और असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइन एक्सपायर होने के बाद आपको आपका प्रोग्रेस देखना है, मतलब असाइनमेंट पे आपको कितना मार्क्स मिला है। अभी 2 असाइनमेंट खुले हुए हैं, असाइनमेंट 1, असाइनमेंट 2। ये नहीं किया मैंने सबमिट किया तो मुझे तुरंत देखना चाहिए रिजल्ट, नहीं। जब तक वो असाइनमेंट सबमिशन डेडलाइन क्लोज नहीं होगा तब तक आप रिजल्ट नहीं देख सकते हैं। लेकिन 10 दिन का टाइम के अंदर अगर आप एक बार सबमिट किया, लगता है कुछ गलती किया आपने, तो दोबारा जाकर आप सबमिट कर सकते हैं। जो लास्ट सबमिशन है वही काउंट होगा 100 मार्क्स काउंटिंग के लिए। ओके, एग्जाम रजिस्ट्रेशन, ढेर सारे क्वेश्चन आ रहा था। तो एनरोलमेंट तो स्वयं पोर्टल से होता है, वीकली जो वीडियो आप पढ़ते हैं इधर से। एग्जाम फॉर्म के लिए आपको एग्जाम रजिस्ट्रेशन के लिए सेपरेट एग्जाम फॉर्म दिया जाएगा, एग्जाम फॉर्म के लिंक दिया जाएगा, जहां से आपको कौन सा कोर्स के लिए आप रजिस्टर करेंगे वो रजिस्टर इधर से करना है। ओके, दैट मीन्स whichever the courses I have enrolled into the enrolled, I have to say July to December 2023 exam form. I have to select the relevant information and select the course that I want to write the exam, pay the exam fee of 1,000 rupees if I am a general candidate, if I belong to SC, ST, or I am physically disabled. In that case, on production of my caste certificate and medical documents, I'll be able to get fee waiver of 500 rupees. That means those candidates who are from SC, ST and medically say disabled with 40% or more disability, they will pay 500 rupees, and other candidates will pay 1,000 rupees, irrespective of whether the course is of 4 weeks, 8 weeks or 12 weeks, and registered for the exam from this portal. What all things you have to select here? Courses that you want to write the exam, then city, you will be given 3 choices. You have to select 3 choices, the city choices, not center choices. 3 cities you have to choose, okay, and pay the examination fee. Okay, once you complete the exam registration, you will be issued with the hall tickets with the exam, say center details. And on the exam, date of exam, you have to go to the designated exam center with your valid government issued identity card. Okay, fee is 1,000 rupees. For SC, ST and physically disabled candidates with more than 50%, 40% disability, fee is 500 rupees. Examination registration is through this portal. Course enrollment is through Swayam portal. Okay. Now थोड़ा स्टैटिस्टिक्स देखते हैं। अभी तक हमने बोले थे कि हमने 3000 कोड से यूनिक कोर्स हमने डेवलप किया।
but we have offered some of these courses in a rerun mode. Okay. 5,372 courses we offered. इसमें more than 2.3 crore learners have enrolled for learning purposes. Exam registration किए थे 28.6 lakhs learners, which is more than 10% learners have actually registered for the exam. And उनमें से 18.8 lakhs student और learners को certificate मिल चुके हैं. इस सेमेस्टर में हम लोग अराउंड 690 कोर्सेज ऑफर कर रहे हैं, जिनमें से 601 कोर्सेज एनरोलमेंट क्लोज होगा 7th of August. So if you are planning to take the course without any further delay, enroll into it. अभी हम लोग जो कोर्स ऑफर किए थे 2014 में हम लोग सिर्फ 3 कोर्स ऑफर किए थे. उनमें से करीब करीब आपके जो है 1 लाख के करीब स्टूडेंट्स एनरोल कर चुके थे और 3000 एग्जाम रजिस्ट्रेशन दिए थे. लेकिन इस बार अगर आप देखेंगे कि लास्ट ईयर 2 सेमेस्टर में हम लोग 1200 से ज्यादा कोर्स दिए थे. उनमें से आप देख सकते हैं कि 40 lakhs के ऊपर बच्चे जो है, बच्चे नहीं कहेंगे, लर्नर्स enrolled into these courses and more than 7.58 lakhs people registered for the exam. और लास्ट सेमेस्टर अगर देखेंगे कि जनवरी 2023 में हम लोग 665 कोर्स दिए थे, जिनमें से more than 24 lakhs people enrolled into the course for learning and more than 5 lakh people registered for the examination. हम कोर्स देते हैं ये नहीं कि सिर्फ से कंप्यूटर साइंस जहाँ पे मे बी मोस्ट पॉपुलर कोर्सेज है वो नहीं देते हैं. हम लोग सारे इंजीनियरिंग जो ब्रांचेस है सारे ब्रांच के ऊपर कोर्स देते हैं, और ये सिर्फ इंजीनियरिंग ब्रांच पे लिमिटेड नहीं है. और लेवल जो है सिर्फ अंडर ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट के लिए नहीं कोर्स देते हैं, नहीं. हम लोग वो भी जो पीएचडी कर रहे हैं उनके लिए भी जो रिक्वायर्ड कोर्स वर्क है वो भी हम लोग देते हैं. तो अब इफ यू सी we are offering the courses from complete spectrum of engineering. That is whether it's a mechanical, computer science, electrical, electronics, biotechnology, chemical, metallurgy, any engineering branch you tell, we are offering the courses from all these disciplines. As well as we are offering the courses in large number from humanities, social science, management, basic sciences like physics, chemistry, mathematics, and all these areas. Okay. एग्जाम रजिस्ट्रेशन जो परसेंटेज होता है, एग्जाम में जितने भी बच्चे और लर्नर्स एनरोल करते हैं उनमें से 90% बच्चे दे कम फॉर राइटिंग द एग्जाम इन द एग्जामिनेशन हॉल. ओके, पास परसेंटेज किस टाइप का है? इट्स अराउंड 70% पीपल पास द एग्जाम. इफ समवन इज सीरियसली सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स ऑफ वीकली असाइनमेंट, नॉट कॉपिंग फ्रॉम अदर्स, बट दे हैव अंडरस्टूड द कॉन्सेप्ट and solve the problems themselves, then there is no reason why the student should fail, because the final exam will be pattern will be similar to the assignment. Okay, only thing in your you have got your assignments which will carry 25% marks in the final exam. लेकिन वो तो हम लोग नहीं देख रहे हैं कि आप खुद कर रहे हैं और ना किसी ने आपके लिए कर दिया हो. तो इसी हिसाब से जो फाइनल एग्जाम होगा वो असाइनमेंट टाइप के भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे जो टेस्ट करेंगे कि आपने खुद पढ़ा है या नहीं, और कुछ में भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स रहेंगे. लेकिन एक बिल्कुल आप समझ लीजिए कि जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन डिट्टो फाइनल एग्जाम में नहीं आएगा. इट मे बी सिमिलर बट इट विल नॉट बी एग्जैक्टली सेम. So until and unless you understand the assignment question yourself, if you expect that final exam पे भी वही question आएगा हम मार देंगे, ऐसे नहीं होगा. In that case, we find that many of the students who thought कि final exam पे assignment question आएगा, they have done bad in the final exam and they did not get a certificate. So please be careful that you have to understand the concept and solve the problems on yourself. ओके, जेंडर स्प्लिट अगर देखेंगे, लड़के लड़की का जो स्प्लिट है वो 60:40 है, विच इज वेरी हेल्दी. अब बहुत सारे क्वेश्चन आ रहा था इसका फायदा क्या है.
आप कोई भी नौकरी की जॉब के लिए जाएंगे, आपके जो डिग्री के बाद आप क्या क्या कर सकते हैं। एक तो है, हो सकता है क्या, यू विल बी लुकिंग फॉर ए जॉब, और जॉब तो आपको डिग्री सर्टिफिकेट देख के नहीं देगा, आपका सीजीपीए देख के नहीं देगा, वो आपको पूछेंगे फंडामेंटल्स कॉन्सेप्ट पूछेंगे। और फंडामेंटल कॉन्सेप्ट के लिए ये नहीं है आप सिर्फ क्लास में अटेंड किया, उतना नहीं होता है। इसके लिए आप किताब रेफर करते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, तो यू कैन ऑल्सो रेफर दिस कोर्सेज, एनपीटीएल कोर्सेज, जो आईआईटी के फैकल्टी, द बेस्ट फैकल्टी जो देश में है, उनसे वो कोर्स किया गया है, क्रिएट किया गया है। So they talk about fundamental concept. So if you are aware of those fundamental concept, then only you will be able to satisfy the interviewer. Okay, तो ये तो एक बेनिफिट है। और से आजकल आप समझते हैं, सुनते हैं क्या, डेटा एनालिटिक्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, ये सारे कुछ वर्ड्स आते हैं, लेकिन ढेर सारे कॉलेजेस में मेनी ऑफ दिस टॉपिक्स आर नॉट टॉट। लेकिन अब जॉब इंटरव्यू के लिए वो तो नहीं बोल सकते कि मेरे सिलेबस पे तो था नहीं, तो मुझे नहीं मालूम, नहीं मेरा टीचर नहीं पढ़ाया। ये आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी बनता है कि जहां पे गवर्नमेंट इतना बड़ा फैसिलिटी किया है, who has stopped you to learn the things on your own from these portals? So if you are looking for your career, it is your career, you have to take the pain, go to the portals where similar things are available, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हैं, सिखाते हैं, take the help of that and learn it and equip yourself with those skills which are required by the industry. ठीक है, आपको समझ में आता है कि आजकल इंडस्ट्री 4.0 बोलते हैं। इंडस्ट्री 4.0 की वजह से जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है या आईटी सेक्टर, कहीं पे भी आप देखिए कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है। आज जो सिस्टम चल रहे हैं, मे बी 2-3 साल के बाद वो ऑब्सोलीट हो जाते हैं। तो देयर इज ए कंटिन्यूअस नीड टू अपडेट योरसेल्फ, and which platform will give you the update? NPTEL can help you by they are offering latest technology courses. Learn it from here. And in the job interview, your body language, how you express yourself, your skills in communication, that is your verbal skill, communication skill. आपको ये पता होना चाहिए आपके क्या क्या shortcomings है, how to overcome that, how to answer to the common questions of the HR. ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट है, एंड ये सारे जनरली आपके कॉलेज सिलेबस में नहीं होते हैं। Most many colleges from the cities, they bring the soft skill expert to train the people, but it may not be the case with all colleges. So we are offering you courses from the soft skill and language skill, how to improve your confidence to face the interviews. Then we are offering the certificates from IITs, which are quite valuable. If you show to the outside world, देखिए हमने ये कोर्स आईआईटी से किया हुआ है, पाइथन कोर्स मैंने आईआईटी से 3 कोर्स किए हुए हैं। That itself will tell that you have got good knowledge about the course, and you should be seen differently from your fellow mates who might have not done this course. Okay, so this improves your job opportunities. Credit transfer. Many colleges and universities are taking these courses for credit transfer. Okay. Then you can also get honors degree or a minor degree for BTech courses. Many of the universities have adopted this what is called regulation of AICT, that if they complete say 20 credits, they can earn a BTech honors in place of BTech degree. Then if you are planning to write for the GATE examination, you definitely need to know these exams are conducted by IITs. If you just see the IIT JEE Advanced or JEE exams, they are not very easy. Possibly you will appreciate that JEE exams are not very easy. And if the similar people, those who are setting the papers of JEE Advanced, if they set up your GATE examination papers, you can just imagine that if you just study 1 or 2 books which was prescribed as part of your regular curriculum, that may not be adequate to crack GATE examination. Because on cracking your GATE examination, you will be getting, say, opportunity to study in the higher educational institute with scholarship. Also, if you want to get a job in the public sector undertakings, you have to score very well in the GATE examination. And GATE exam will seriously test your fundamentals, fundamental concept. Since many of the faculty members, बहुत सारे faculty इसी type का है जो IIT में इस type का exam paper setter थे, तो अगर वही
फैकल्टी अगर कोर्स देते हैं तो नेचुरली वो फंडामेंटल्स के ऊपर प्रेशर देके वो कोर्स डेवलप करेंगे. एंड इफ यू स्टडी दोस कोर्सेज इट विल हेल्प यू नॉट ओनली इन क्लियरिंग योर गेट एग्जामिनेशन बट विल आल्सो हेल्प यू इन गेटिंग अ बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी. देन अगर आप फैकल्टी हैं तो देन डेफिनेटली यू कैन डू सम कोर्सेज फ्रॉम हियर which are marked for the faculty development program and earn your required credit points. If you are in the industry, because of the rapid changes taking place in the industry, there is an urgent need that every after 4 or 5 years, one has to learn newer things. So this gives an opportunity. The NPTEL courses gives an opportunity for the learners in reskilling or upskilling. Otherwise, उनके लिए job बचाना थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है. Okay. Reason for taking the course. Reason for taking the course is many people will take the course for credit. Some people will take these courses for, say, reskilling or upskilling or getting preparing better for the job opportunities. Okay. There are other people who are taking these courses for the research activity. अगर आप देखेंगे 20-20 कोर्सेज जिसमें एनरोलमेंट और रजिस्ट्रेशन बहुत ज्यादा होते हैं, अब देखिए जिस टाइप का जॉब अपॉर्चुनिटी है उस टाइप का कोर्स के लिए इंटरेस्ट भी लोग के ज्यादा है. और कितने लोग एनरोल किए हैं एक सेमेस्टर में वो आप देख सकते हैं. जैसे जावा, पाइथन, क्लाउड कंप्यूटिंग, डेटा साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इस टाइप का कोर्स के सिंस आजकल जॉब मार्केट इसी ट्रेंड चल रहा है तो इसी टाइप का कोर्स की इंटरेस्ट ज्यादा है. और एक सेमेस्टर पे कितने लोग ज्वाइन किए हैं वो नंबर आपके सामने है, उसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं. इसके बिना आप एक कोर्स देखिए सॉफ्ट स्किल और पर्सनालिटी, इस टाइप का कोर्स भी काफी पॉपुलर है क्योंकि ये कॉन्फिडेंस देता है इंटरव्यू कैसे फेस करना है. ये छोड़ देते हैं हम. ये जो हमने बताया आपके जी कि अगर आपने कोर्स एनरोल किया तो फैकल्टी को आप तो क्वेश्चन पूछ सकते हैं ये सेशन पे, क्या बोलते हैं आपके वेब के थ्रू. लेकिन वो छोड़ के भी आप जो यूट्यूब का लाइव सेशन है उसी से भी आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं. इसके बिना हमने बताया कि रिसर्च स्कॉलर्स को भी हम लोग एंगेज करते हैं जो आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग पे हेल्प करते हैं. ठीक है. तो उसी के लिए एवरी वीक वी आर कंडक्टिंग लाइव सेशन थ्रू पीएमआरएफ स्कॉलर्स. इस टाइप का इंफॉर्मेशन हम लोग कॉलेज के जो सिंगल पॉइंट ऑफ कांटेक्ट उनको रेगुलरली देते हैं कि किस दिन किस प्रोग्राम के लाइव सेशन है. प्लीज ज्वाइन दैट सो दैट इफ यू हैव गॉट एनी डाउट रिलेटेड टू योर कोर्स यू कैन गेट योर क्लैरिफाइड. ओके. इसके रिकॉर्डेड वर्जन भी मिलते हैं. जो डेज है आप देख सकते हैं, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे, ये 5 दिन हम लोग ये सेशन चलाते हैं. किस टाइम पे करते हैं ये स्क्रीन पे आपका सामने है. प्लीज ट्राई टू अटेंड टू दिस सेशंस. जो ये सेशन करते हैं वो बोलते हैं कि ये बहुत बढ़िया था, काफी इंफॉर्मेटिव था, उन्होंने बहुत कुछ सिखाया, कैसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं उसके टिप्स दिया. सो दीज आर बेनिफिशियल बाय द स्टूडेंट्स. व्हाट वी आर नॉट सेइंग, दीज आर सेड बाय मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स. इसके बाद आता है डोमेन स्कॉलर. कितने कोर्स आपने किए हैं, किस टाइप का कोर्स किए हैं, उसी के हिसाब से हम लोग कुछ स्टूडेंट्स को बोलते हैं एनपीटीएल स्टार्स. एनपीटीएल डोमेन स्कॉलर को हम ज्यादा बोलेंगे नेक्स्ट स्लाइड पे. लेकिन अगर आपने एक सेमेस्टर पे 4 से 6 कोर्स लिया है और उसमें से 3 कोर्स में टॉपर है, देन वी कॉल यू एनपीटीएल सुपरस्टार. अगर 4 साल या 8 सेमेस्टर में आपने 18 एग्जाम में अटेंड किया और उनमें से 2/3 ऑफ द एग्जाम में आपने सक्सेसफुली कंप्लीट किया, वी कॉल इट एवेंजलिस्ट. सिमिलरली मोटिवेटेड लर्नर और एंथुसियास्ट उस टाइप का है जहां पे आप 4 सेमेस्टर पे 8 कोर्स में अपीयर हुआ और 75% कोर्स में आपने पास किया. मोटिवेटेड लर्नर पे कंटिन्यूटी होना चाहिए, एंथुसियास्ट में कंटिन्यूटी हम नहीं देखते हैं, लेकिन क्राइटेरिया रिमेन सेम. डिसिप्लिन स्टार, अगर आपने 50 वीक्स ऑफ लर्निंग कंप्लीट किया है एक पर्टिकुलर एरिया से, देन वी कॉल इट डिसिप्लिन स्टार. और बिलीवर किसको बोलते हैं हम? बोलते हैं कि अगर 4 से 6 एग्जाम आपने पास किया एंड एटलीस्ट प्रेजेंट इन 4 to 6 एग्जाम, अगर आपने 4 एग्जाम कंप्लीट किया, देन वी कॉल इट एनपीटीएल स्टार. लेकिन जो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है वो है डोमेन स्कॉलर. इसको क्या क्या ये क्या है?
ये अगर आपने जॉब मार्केट पे जाते हैं, देखते हैं कि आजकल डेटा साइंस का काफी इंटरेस्ट लगता है। तो डेटा साइंस पे अगर आपको स्पेशलाइज्ड एक्सपर्ट बनना है तो कौन सा कोर्स लेना है, तो उसी का एक दिशा देंगे ये एनपीटीईएल डोमेन स्कॉलर। ये हमने जस्ट एग्जाम डेटा साइंस एक एग्जांपल दिया, लेकिन अगर आपको दूसरी चीज में अगर इंटरेस्ट है और आप उसी एरिया में एक्सपर्टाइज बनाना चाहते हैं तो किस टाइप का कोर्स आपको लेना है वो एक्चुअली बताते हैं डोमेन स्कॉलर। तो इसकी जो रीजन है ये है कि आपको मास्टरी देता है एक पर्टिकुलर एरिया जो आपको हेल्प करेंगे जॉब के लिए या हायर एजुकेशन के लिए। इनमें से आप देखेंगे तो कुछ कोर्सेज होता है डोमेन स्कॉलर पे, कुछ कोर्स होते हैं कोर कोर्स, कुछ होते हैं इलेक्टिव कोर्स, और टोटल ड्यूरेशन भी बताया जाता है कि कितना वीक का लर्निंग होना चाहिए। सपोज आप लोग कंप्यूटर साइंस के कुछ कोर्स लेना चाहते हैं, कंप्यूटर साइंस में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डेटा साइंस, प्रोग्रामिंग, फाउंडेशन ऑफ कंप्यूटिंग एंड सिस्टम्स, ये 5 जो आपके डोमेन्स है। अगर आप सपोज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डोमेन्स के एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो आपको 60 वीक्स के लर्निंग आपको करना है। कितना कोर्स लेना है? 4 कोर कोर्स है आपके लिए। 4 कौन सा 4 कोर कोर्स वो भी लिखा हुआ है, कब ये ऑफर हो रहा है वो भी दिया हुआ है, और 2 इलेक्टिव कोर्स। अगर आपने 6 कोर्स विद इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स, विद इन ए पीरियड ऑफ 3 इयर्स अगर आपने 6 कोर्सेज, 4 कोर कोर्सेज और 2 इलेक्टिव कोर्सेज अपने कंप्लीट किए हैं विथ एन एवरेज स्कोर 60 मार्क्स and individual course marks not less than 55, तभी आपको डोमेन सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आपने डोमेन सर्टिफिकेट मिला है तो आपके जो पिक्चर है, जो फोटोग्राफ है, वो इधर डिस्प्ले होगा। कौन डोमेन स्कॉलर करते हैं? आप बोलेंगे आप तो हम तो मस्त है इधर कोर्स कर रहे हैं तो व्हाई शुड आई डू दैट। यू सी देयर आर फैकल्टी मेंबर्स who are expert, who has become domain scholars, there are students, they are employed professionals from different sectors. You will find many people are doing this because they feel that until and unless you have done expertise on a particular area, job market is very competitive now. Getting a job is not that easy. Okay, so you really need to take some extra step to learn the things on your own. Out of 12 disciplines, there are 12 disciplines, we have created 51 domains. एंड ये है सैंपल डोमेन सर्टिफिकेट, जहाँ आपको फोटो होगा, कौन सा डोमेन आपने किया है, कौन सा कोर्स किया है, सारे डिटेल्स इधर दिया हुआ है। ये नहीं कि सिर्फ पब्लिक एक ही डोमेन करके बैठ जाते हैं। 571 scholars have completed 1 domain. There are 32 scholars who have completed 2 domains, and there are 4 scholars who have completed 3 domains. पॉपुलर कोर्सेज जो है इंडस्ट्री के लिए वो इसी टाइप का है, लिस्ट सामने है, देख सकते हैं। जो हम लोग बात कर रहे थे कि डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग, इस टाइप के कोर्सेज की डिमांड आजकल ज्यादा है। इसके बिना आप रिन्यूएबल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स, डिजाइन थिंकिंग, ब्लॉकचेन, साइबर सिक्योरिटी, इस टाइप का कोर्स भी काफी पॉपुलर है इंडस्ट्री के लिए। इनिशिएटिव पे अगर देखेंगे तो क्रेडिट ट्रांसफर जो होता है वो कॉलेज करते हैं, उसके लिए एआईसीटी और यूजीसी ऑलरेडी अप्रूव किया हुआ है स्ट्रक्चर कि 20 to 40% क्रेडिट्स कैन बी टेकन फ्रॉम द इन ए सेमेस्टर। जो भी क्रेडिट है उसके 20 to 40% कैन बी टेकन फ्रॉम स्वयं। ओके, ये तो गाइडलाइंस यूजीसी और सीईसी दिया है, लेकिन ये अप्रूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो यूनिवर्सिटी और ऑटोनोमस कॉलेज के लिए है। उन लोग क्या करते हैं, वो पहले अप्रूव करते हैं कि हाँ हम लोग क्रेडिट करेंगे स्वयं कोर्स से, फिर कौन सा कोर्स हम लेंगे उसके लिस्ट बनाते हैं और इक्विवेलेंट क्रेडिट क्या होगा। आपने देखा होगा स्वयं पोर्टल पे हमने दिखाया सारे कोर्स के अगेंस्ट में लिखा हुआ है कि व्हाट इज द क्रेडिट इक्विवेलेंसी। NPTEL recognizes that 30-hour course is equivalent to 3 credit, 2 credit is given to 20-hour courses, and 10-hour courses will carry 1 credit. लेकिन इसको हम लोग 3-2-1 लेंगे या 4-3-2 लेंगे, मतलब एनहांस करेंगे, ये डिपेंड करते हैं द रेजोल्यूशन ऑफ द एकेडमिक काउंसिल ऑफ द यूनिवर्सिटी एंड ऑटोनोमस कॉलेजेस। ओके,
हमने साइन किया MOU विद AICTE सो दैट कुछ कोर्सेज जो है NPTEL में अगर फैकल्टी ये कोर्स करते हैं देन दे गेट ए FDP सर्टिफिकेट। इसके लिए कौन सा कोर्स है FDP के लिए वो मैंने एक्सेल शीट में भी दिखाया, और स्वयं पोर्टल में अगर हम जाएंगे कोर्स पेज में हमको इधर समरी सेक्शन पे भी लास्ट में मिलेगा कि कौन सा कोर्स FDP के लिए चुने हुए हैं। इस टाइप का सैंपल FDP सर्टिफिकेट के कॉपी आपके सामने है। 4 weeks course is equivalent to half FDP of 1 week. 8-week course is equivalent to full FDP of 1 week, and 12-week courses are equivalent to 1.5 FDP. फैकल्टी अगर देखेंगे कि कितने सारे फैकल्टी लेते हैं, यहाँ डेफिनेटली 70 से ज्यादा परसेंटेज जो लर्नर्स है वो स्टूडेंट होते हैं, क्योंकि उनके लिए जॉब मार्केट, हायर स्टडीज ये इंपॉर्टेंट होते हैं। इफ यू वांट टू स्टार्ट योर ओन से कंपनी, then you really need to know how to get the funding, how to create a project proposal, how to manage the supply chain. इसके लिए जो conventional जो BA BTech में पढ़ाया नहीं जाता है, but we are offering you a lot of courses from the entrepreneurship, how to start all these activities. तो 70% पे ज्यादा जो स्टूडेंट या लर्नर्स है वो स्टूडेंट होते हैं। Around 20% learners are actually the faculty members, and remaining people come from the industry. Okay, those who are already in the industry. So you can see 70% people, 17 to 22% people are from the faculty who are taking these courses. Now, in the single point of contact, जो होता है, he or she is the, you can say, ambassador of NPTEL in local chapter colleges. That means they take the inputs from the college, NPTEL, and pass it on to the college administration and the students so that they can take the benefit of these courses. To help them in their career prospect, what we do, we provide some financial support to the faculties if any of their papers have been accepted in a conference which is conducted in IITs or NITs. In that case, if your paper is accepted, you can apply for, say, reimbursement to the extent of 25,000. What are the things will be reimbursed? Your registration fee, your travel expenses, and your accommodation related expenses can be reimbursed. For this, every month, first 10 days, there is a window during which you have to apply with all documents. And if you satisfy all the criteria, we'll approve it. And on completion of the program, you have to submit all the bills and vouchers for getting the reimbursement. In case you are not availing the benefit, but any of your colleague, faculty colleague, who is taking interest in NPTEL activities is interested to take this benefit, yes, you can actually ask him or her to take apply for this and take benefit. GATE exam जो student के लिए मैंने बताया is not only for getting admission in the higher academic institutions with scholarship, but also if you want to get opportunity in the public sector undertakings. In that case, it is absolutely essential that you have to do very well in your GATE examination. और उसके लिए आपके फाउंडेशन जो है सॉलिड तगड़ा होना चाहिए। इसके लिए आप NPTEL के कोर्स यूज कर सकते हैं। लेकिन NPTEL में हमने बोला है कि आप 3000 से ज्यादा कोर्सेस है, कौन सा कोर्स हम रेफर करेंगे? उसके लिए हम लोग क्या किए, सिलेबस मैपिंग, वो हम दिखाएंगे। इसके बाद जो कोई भी एग्जाम के पहले हम लोग पुराना क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते हैं, तो NPTEL में भी आपको पुराना गेट पेपर जो है वो पेपर को सॉल्यूशन वीडियो में दिया हुआ है, वीडियो बेस्ड सॉल्यूशन दिया हुआ है। सो अगर आपको वीडियो सॉल्यूशन नहीं आता है, सॉल्यूशन आप करने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, यू कैन रेफर टू द वीडियो सॉल्यूशन। कोई भी एग्जाम के पहले हम और एक भी काम करते हैं कि मॉक टेस्ट देते हैं फुल सिलेबस के ऊपर, सो दैट दिस गिव्स मी अ कॉन्फिडेंस कि हम लोग कितना प्रिपेयर्ड है। तो ऑनलाइन असेसमेंट प्लेटफॉर्म भी इधर है जहाँ पे हम मॉक टेस्ट ले सकते हैं। और अगर मेरा डाउट है, NPTEL is there, here we'll be providing you support to clear your doubts through PhD scholars. तो 10 डिसिप्लिन है जहाँ पे हम लोग गेट सिलेबस मैपिंग किए हुए हैं। ओके, जस्ट अ मिनट। NPTEL Plus एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप कोर्स कभी भी ले सकते हैं। इनमें से ढेर सारे कोर्स जो NPTEL का कोर्स है
जो IIT फैकल्टी IIT के सिलेबस और कोई यूनिवर्सिटी का सिलेबस के मुताबिक कोर्स ऑफर किया है, उस टाइप का कोर्स NPTEL पे मिलते हैं, और NPTEल के कोर्स है वो जनवरी और जुलाई पे भी मिलते हैं, इन बिटवीन कभी नहीं मिलते। लेकिन इंडस्ट्री में जो है उनके लिए है कि ठीक है, हम आज किसी भी टाइम पे लगता है कि मुझे से पाइथन कोर्स करना है, तो उसके लिए मैं आई कैन नॉट वेट टिल नेक्स्ट जनवरी। मेरा 7 जुलाई के बाद एनरोलमेंट क्लोज हो गया, तो आई हैव टू वेट टिल 7 जुलाई 2024 की जनवरी तक आई हैव टू वेट। So if I do not have the time, then to help those students who are primarily from the industry or from other sectors, we are offering certain courses which are not only NPTEL courses which are offered by IIT faculties, but also courses created by the industry experts. That means they will not be on a specific syllabus, not following 10 hours, 20 hours, 30 hours structure, but it can be on a very special topic, or maybe on a particular language, on a particular system. They'll be giving a lot of exposure. It could be short or long-term training also. So these courses are definitely not free. You cannot access the contents freely. Suppose you want to do the Python course here it will take 3 months time. But if you feel that, okay, I want to complete this course within a month's time, then come to NPTEL, pay certain fees, get access to the contents, solve all the assignments, and write the exam whenever you want. Every week exam is conducted, you write the exam and complete the course within 1 month's time. Okay, this is what NPTEL Plus is. Then comes internship. If a student is topper in a course, in that case, the internship is extremely important for a career in the engineering sector. Okay, so where do you get internship? It's very difficult to get the internship, but NPTEL offers internship opportunity if you are a course topper. If you are a course topper, we'll ask you if the faculty is ready to help take the intern. In that case, we'll ask your willingness. If you are interested, you submit certain documents like your resume, the statement of purpose, that is what you intend to do during the, say, internship period, and what is your what's called your last 2 semester grade sheet. Based on these documents, the faculty will be selecting a group of students who will be sent to that particular IIT. Say you have taken a course from IIT Kanpur. So you will be going to IIT Kanpur, staying in IIT, maybe in a hostel or some other accommodation, and working under the same faculty for 1 to 3 months duration. Okay. On completion of that, you'll be getting a certificate from IIT on internship completion, as well as to recover your expenses that you have made, that you have paid to IIT hostels and all. We'll be giving you some financial support also on completion of your internship. What is that amount? It will be to the extent of 5,000 rupees per 4 weeks of training. Okay, if it is 6 weeks, that means you'll be getting 7,500 rupees, and so on. Texas Instruments is a leading giant, say, primarily in the IC chip manufacturing. So they are also offering internship or maybe a full-time position to the students who are topper in certain courses. If they complete certain courses within a predefined timeline, say 4th semester or 6th semester, then they are eligible for a TI internship. The course list is either basic electrical circuits and analog circuits or analog IC design. Along with that, you have to complete certain other courses like circuit analysis for analog designers, introduction to time-varying electrical networks, and so on. If you complete these courses within 4th or 6th semester, then you are eligible for an interview with TI for an internship or a full-time position. Okay. Additionally, it's, as I said time and again, that it's not only that if you are from computer science and if you know computer science subjects, you are going to get a job. At least 50% weightage is given to the soft skill, because once you join in the industry, you will not be working alone. You will be working in a group. Definitely, it's important that the group may consist of people from different places
from different social, economical background. It is absolutely essential that you should be able to mix with them and be flexible to adapt to respect others' views and all. So soft skill is extremely important for you. So not only that, once you want to apply for an interview, you need to know how to prepare a resume, good resume, how to actually develop that one. Then how to search different portals to get a job. Okay, important to know what are your shortcomings, your communication skill, your other skill, what are the shortcomings, and how to improve on that. So what NPTEL does, if you have done an NPTEL course and if your college is interested to organize the soft skill training, they can write back to us. We organize soft skill training for 2 durations. One is for 1 week, another is for 2 weeks, during which the students will be given undergoing employability assessment test. There will be online interactive session where the experts will tell them what are their shortcomings and how do they improve on that. There will be English speaking, English language tests, online mock interviews, where they will be told that what are the common questions and how to respond to that, your body language, how to prepare the presentation and all, everything will be taught during this phase. So it's not only that, okay, you'll be given a lecture, you'll also be given take-home assignment, and it is essential that if you want to get a certificate, at least 80% percentage attendance is mandatory. So this is extremely important for getting a job. It's not only you do the course and do well in the course, until and unless you have good soft skill, you are not likely to be considered for the job. That is the general perception. The people, those who have undergone the training, they have given us some feedback, and some of these feedbacks are before you. I'm not going to read it out. If you visit any of our social media platforms, you'll be coming across many such feedbacks which has come from the different learners. Now we are trying, what we are saying that, okay, after you do a course, we want to see that you get a better placement opportunity. And for that, we really need to know how the industry thinks about this. What trend is there in the industry? What type of courses we should offer? So we definitely find that at least 6 to 8%, or at least 5 to 6% of the learners are actually from the industry who are taking these courses for reskilling or upskilling. They know that they need to learn something new and they're taking these courses. So we are taking the input of the industry bodies in framing our course structure. Sometimes the faculty members or the experts from the industry join hands with NPTEL to offer certain courses, jointly co-offering the courses. Also, they offer certain lectures. Okay, not only the trend that goes in the industry, but how the students should actually develop themselves for the better, say, competitive career, how to develop their leadership skills. All these things are done by the industry associate. So we are in touch with, or like local chapters, different colleges we are connected with. We are also connected with different industry bodies, whether they are in government sector or private sector. Say whether they are in IT sector, electronics, semiconductor industry, consumer electronics, power transmission, generation, research and development, telecom network, anywhere. We are in touch with more than 80 companies, both from government and private, to take their inputs, to train their manpower. So people, those who are asking the kya faida hoga, if you feel that, okay, these people, these 80, 85 industries are actually taking these courses for the benefit of their learners, then you can definitely feel that, okay, what is the use of these courses, even for the people, those who are in the industry, not trying to get a job, but even for the who are in the industry. So these are the people, say, industry experts who have given some live sessions. You know the names of these people, they are very big names. As far as the job market is concerned, whether it's Capgemini, IBM, Mahindra, Infosys, all these, they are big names, and they are associated with us to provide different inputs. Additionally, you know, there is a provision that there are some students from a local chapter college who are meritorious, okay, who have got interest to learn.
but they cannot afford to pay 1,000 rupees. In that case, if the college is from tier 2, tier 3 cities or towns, in that case, the college can check the, say, financial background and send the recommendation to NPTEL saying that these students cannot afford to pay the 1,000 rupees fee, and if NPTEL can support that. So in that case, based on the recommendation and based on the fund that we have received in this regard from the industry and certain individuals, we provide fee waivers. That is, initially, the students will be paying 1,000 rupees and registering for the exam. But if they successfully complete the course, we will be refunding their 50% fee. That is, they will be paying 1,000 rupees for registration. But if they are successful, in that case, their 50% fee or 500 rupees will be refunded. Whose 500 rupees will be refunded? If this student's name, only for those students who are considered economically weak and whose names have been forwarded by the academic institution to NPTEL and NPTEL has approved it. Only for them, 500 rupees will be refunded later. Translation, I have shown you that, okay, English transcript is available, but we have got transcript in multiple other languages, and NPTEL doesn't have expertise on different languages. Say, if this course has to be converted into Hindi, yes, we do not have too many people who will be converting this language into these courses into Hindi. So what we do, we depend on the faculty members of local chapter colleges who help us, who takes the English text from here and convert it into Hindi, Tamil, Telugu, Malayalam, Odia, Bengali, Assamese, different languages. Okay. So if any of the faculty members, if you know the subject and if you have got good grasp of the local language, then you can definitely join hand with NPTEL to take up this translation activity, for which you get a recognition that your name will be printed on the booklet, as well as you will be getting certain remuneration. This is the languages we are working on for converting the videos into different texts. Okay, NPTEL is connected to the, say, learners to different social media handles like LinkedIn, Instagram, Facebook, Twitter, and YouTube. You can see the followers, you can follow our channels, and you'll get regular updates what all activities goes on in the NPTEL front. If you are an NPTEL star that we talked about, if you are a star, you also get a memento. The type of t-shirts that is shown here, you get that one, and you can proudly show to your friends that you have done something which was not compelled to you to do, but you have learned the things from IITs and done very well. Okay, so this is a proud moment for you. We are also conducting 1 week duration lab workshops in different institutions, during which a 35 to 40 students group will be going to the institute and taking part in, say, morning and afternoon session, where they will be undergoing theoretical session as well as conducting certain experiments every day. And on the last day, they will be taking up final examination. At the end, they get a certificate. But for these, they have to pay 200 rupees to NPTEL and bear the accommodation related expenses in the institute wherever they are. Local chapter, I'm not going to go in much detail. If someone wants to become a local chapter, there is no requirement of any specific building, a required charge or a particular room. Only interest to become a local chapter is what is required. You submit a form signed by the head of the institution, and this comes with a lot of benefits. First, as soon as you become a local chapter, a separate dedicated page of local chapter is created in the NPTEL portal. So all activities related to that local chapter will be reflected there, all NPTEL related activities. Then whatever courses we are creating, if you want that, okay, you should copy this content, the videos, and keep it in your library. Then we can send the hard disk and get it copied free of cost. As we said in the last, this one, that you can ask for the fee waiver for your needy students. If you want to help the students of your college, you can possibly identify some faculty members who will be joining into the course and acting as a mentor for the students. And they will also be getting a recognition if the students do well
in the certification exam. If there are, say, local chapters which are in a very far area where there is no NPTEL local chapter, and there are about 200 students who wants to write the exam, in that case, if you write to us, we'll try to provide a local examination center. So although there is no financial dealings between NPTEL and the local chapter, but the local chapter, on becoming a local chapter, the college gets a lot of benefits from here. And based on the performance of the students, the college gets a recognition, as well as the local chapter, the faculty also gets a mentorship recognition. Local chapters are spread across the country. You can see we are available in the length and breadth of the country. Not only that, our wings are spread across the boundary of India also. There are about 48 local chapters outside India. And local chapter participation has been continuously growing. In the last year, July 2022 semester, we had about 90% enrollment from the local chapter colleges. Once a local chapter has got 25 people registering for the examination and are physically present for the exam, and out of that, if 13 people have actually successfully completed the examination or got the certificate, then only the first recognition comes in the form of a active local chapter. That is, first a college becomes a local chapter, and next time, if there are 25 candidates who are writing the exam, and if at least 13 of them gets a certificate, then the college gets a recognition of active local chapter. For the first new local chapters, our suggestion is that first, maybe you can ask the students to take courses from the soft skill or English skill, so that they are aware of how the whole program runs. Then slowly expose them into the programming courses, skill-based courses, and definitely encourage them to take certain courses from the domain. Particularly if they can complete within a period of, say, 2 or 3 semesters one particular domain, that will be really helpful. They can also be, say, advised to explore the GATE examination portal, which will help them to get deeper understanding of the courses. All rerun courses are to be taken initially so that they get access to the videos as well as one set of sample assignment much before the course start date. Appointing a faculty to act as a mentor will definitely help the learners. And you have the dedicated time slot for the NPTEL courses, and do not keep any college activity around the NPTEL exam time. A faculty, if they become a mentor, then based on the performance of the student, they get a mentor certificate. Okay. They should get 10 mentorship points. This is linked to the student's score. Say if it is between, say, 60 to 74, then 5 points is. So if there are 2 students who have been mentored and each got 60 to 75 marks, then 2 students will fetch the mentor certificate. With this, I'll stop. If there are any question, possibly I can take that one. Over to the Spock. Now, students, if you have got any doubt, you can now post your queries. Yes, madam, if you have got any question, if you have noted which has not been addressed, we can take up. So is my voice audible? Yes, yes. Yeah. I think if they have questions, I will post it to you, because these students, I don't think they have questions. I think all the questions have been resolved. So if they still have questions, I will post it back to you. Sure. Okay. Through the email. Yeah. So in that case, we can wrap up the session now. Yes. Joyshri. Yes, sir.
We can wind up, sir. Sure. Okay, sir. Thank you.